Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have discussed about the first exercise of chapter number 8, that is comparing the quantities. In this particular class, students will be starting the exercise of 8.2. Alright students, looking at the first question, what it says, students, convert the given fractional numbers to percent. So basically in this particular question, what you need to do, you have to convert these fractions into this percents. Alright, so we have to convert the fractions into percents. Alright, so the first question here is, students, 1 upon 8. So if I want to convert this 1 upon 8 into the percents, what I need to do, by multiplying 100 over 100 on both the sides. Alright students, now it will be 1 upon 100 as such and up into 100 upon 8, right, like this. Now students, 100 divided by 8, what is 100 divided by 8? Have a look. 8 into 1 is 8, then it is 2 remaining, 0 down, it is again 2, 16, 4, then point, it is point here, then 0, 5, 40. Alright students, so 100 upon 8 is equals to 12.5 into 1 upon 100. So basically it can be written as 12.5 upon 100. And what is this, students? It is 12.5 percentage. Alright students, what is this? 12.5 percentage. Alright students, so this is our first part. Now we have to solve the similar part, that is 5 upon 4. Alright, and students, to solve that particular thing, that is 5 upon 4, will multiply by 100 over 100 on both the sides, right? 4 and 100 will be cancelled out from each other on the table of 25, as 25 into 4 is equals to 100. So 4 into 25 is equals to 100. So students, 5 into 25 upon 100, 5 into 25 is, students, 125. So 125 over 100 is 125 percentage. Alright, because 1 upon 100 is equal to percentage, and if this is like that, then it means percentage, and 125 means 125%. Alright students, in this way you can easily solve the question. Looking at the next thing, students, that we want to discuss is 3 upon 40. Now students, you have to convert this fraction into the percentage. This is 3 upon 40. 3 upon 40 into 100 upon 100. 0 will be cancelled out from the 0. Right students? What is left? 3 into 10 upon 4 into 1 upon 100. So this is 30 upon 4. 30 upon 4 into 1 upon 100, right? So students, 30 upon 4. 4 into 7 is equals to 28. 2 is remaining. Here is the point, and then it is 0, then 5, then 20. So students, it is 7.5 into 1 upon 100. So it can be written as 7.5 upon 100, right students? And now this 7.5 upon 100 can be written as 7.5%. Okay, so it is 7.5 percentage. Alright students, and in this particular way you can easily solve the question. This question is again the same that we have discussed earlier, so you have to practice this particular question at your home. Alright students, the next question that we are going to discuss is question number 2. What is that, students? Convert the given decimal fractions to percentage. Okay students, the decimal fractions are given to you and you have to convert that into the percentage. Alright students, firstly have a look at this particular question, that is 0.65. In this particular question, firstly we are going to remove the decimal, and if we are removing the decimals, then the number of digits after the decimal will be written as the 2s or 3 or number of the zeros over 1 at the denominator. Alright students, तो जैसे अगर हम डेसिमल के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो मैं इसके डिनोमिनेटर पे 2 zeros लगाऊंगी over 1. Okay, so it can be written as 65 upon 100. Alright students,
Now you have to convert the given decimal fractions to percentage. So 65 upon 100 is equals to 65%. All right, students. And in this way, you can solve this question. Next, students, it is 2.1. 2.1. When you remove the decimal, one digit after the decimal, so 10 over 1. Okay? Then it is 21 upon 10. Now, if you have to convert this into the percentage, then you need 100 at its denominator. So we'll multiply 10 over 10 on both the sides. So it is 21 into 10 upon 10 into 10. So this is 210 upon 100. Students, 200 upon 10 upon 100 can be written as 210%. Okay? And this is the required answer. Looking at the next question, students, what is that? 0.02. 0.02. When you remove the decimal, two digits after the decimal, so 2 zeros over 1. So students, it is 2 upon 100. And it can be written as 2%. And it can be written as 2%. Next question, students, 12.35. Now students, in this particular question, when I remove the decimal, two digits after the decimal, so there will be 2 zeros over 1 at its denominator. So कितना परसेंट हुआ ये 12.35? ये हुआ 1235%. Alright students, it is 1235%. Looking at the next question, students, what is that? Estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. अब हमें बताना है कि इस फिगर का कितना एस्टिमेट पोर्शन है जो कि कलर्ड है, और इसमें हमें ये भी बताना है कि वो कितना परसेंट होगा. सपोज स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ आपको, देखिए, दिस इज़ फर्स्ट पोर्शन. अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो ये सेकंड पोर्शन हो गया, इधर ये कर दूँ तो ये थर्ड पोर्शन और ये फोर्थ पोर्शन. अगर इस फिगर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये है, अगर ये कलर्ड है ना, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट हो गया, ये वाला थर्ड पार्ट हो गया और ये वाला फोर्थ पार्ट हो गया. तो ये सारे 4 पार्ट्स हो गए. अब इसमें बताइए कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? एक ही पार्ट कलर है ना, तो 1/4, मतलब 4 पार्ट्स में कितने कलर्ड हैं? सिर्फ एक कलर्ड है. ओके, तो आउट ऑफ द 4 पार्ट्स ओनली एंड ओनली 1 इज कलर्ड. हमें ये चीज़ लिखनी है क्योंकि ये चीज़ हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज आस्क्ड दैट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड. सो आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 part is colored. Alright students, and percentage that is colored is equals to 1/4 into 100/100. क्योंकि 1/4 क्या है? वो पार्ट जो कलर्ड है, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so 4 will be cancelled out on the table of 25 to have 100. Okay students, so it is 25/100 and this will be written as 25%. Alright students, so what percentage is colored? 25% of the picture is colored. Alright, looking at the next thing, what is that? The figure 2. Same question, estimate what part of the figure is colored and hence find the percentage which is colored. So students, there are 1, 2, 3, 4, 5. There are the 5 parts of the picture, and out of the 5 parts, 1, 2, 3, only 3 are colored. So write it like that. 3 parts out of 5 parts are colored. So percent of colored is equals to 3 upon, कितने पार्ट कलर्ड हैं? 3 कलर्ड है. कितने में से कलर्ड है? 5 में से. सो इसको अगर परसेंट बनाना है तो विल मल्टीप्लाई 100/100 ऑन बोथ द साइड्स.
So it is, students, 5 will be cancelled out on the table of 20, as 5 into 20 is equals to 100. So 5 into 20 is equals to 100. So it is 3 into 20 upon 100. Students, 3 into 20 is 60. 60 upon 100 and its answer is 60 percentage. तो इस पिक्चर में कितना कलर्ड है, इस पिक्चर में जो कलर्ड पोर्शन है वो कितना है, 60%. 60% of the picture is colored. Alright, looking at the next question, what is that? Estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. Same question. अब देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 parts and out of that 8 parts 3 are colored. Write it like that. 3 parts out of the 8 parts are colored. All right, so we have to find the percent that is colored is equals to 3 upon 8 into 100 upon 100. Right, students? Now you can cancel that on the table of 4. So 4 into 2 is equals to 8 and 4 into 25 is equals to 100. Okay, so it is 3 into 25 upon 2 into 1 upon 100. All right, students, now have a look. What is this, students? 75 upon 2. So this is 75 upon 2 into 1 upon 100. All right, 75 upon 2 is, students, 37.5 upon into 1 upon 100. So students, the answer will be, have a look, students, 37.5 upon 100. So it can be written as 37.5 percentage. All right, and this is the required result. Looking at the next question, students, what is that? The question number 4. Find. In this particular question, students, you have to just solve the questions. First part is 15% of 250. Students, 15% can be written as 15 upon 100, right? Because this is percent. Percent means upon 100, per 100. All right, students. So it is 15 upon 100. Of का मतलब होता है multiply and उसके बाद 250, right? So यहाँ पे हमें ये चीज़ solve करनी है, 15 upon 100 into 250. 0 will be cancelled out from the 0, right? What is left? 15 into 25 upon 10. 25 into 15 is equals to 125 into 375. So 25 multiplied by 15 is equals to 375 upon 10. Now, students, this can be written as 375 upon 10. There is 1 0 at the denominator over 1. So you have to put the decimal before one digit. Okay, starting from the end. So it is 37.5. This is your answer. All right, students, and this is the required result. Next question, students, 1% of 1 hour. So firstly, students, to solve this question, this is a very simple way. You can solve this question from hour to hour, and you can also do that in the case of minutes. Okay, so for example, if I'm talking about 1%, then it is 1 upon 100. Of means multiply, 1 hour means 1 hour. Okay, so it is 1 into 1, 1 upon 100, and it can be written as 1 upon 100 is 0.01. Okay, so it is 0.01 hour. And this is the required answer. Looking at the next question, students, what is that? 20% of rupees 2500. So 20% means 20 upon 100. Of means multiply 2500. 2 zeros will be cancelled out from these 2 zeros. Okay, so now 20 into 25. So students, the answer of this thing is 500. What 500? Rupees 500. All right, students, this is the answer. Looking in the next part, students, 75% of 1 kg. 75 can be written as 75 upon 100.
Of means multiply 1 kg. 75 into 1 upon 100 kg. Now students, 75 upon 100 kg. So it can be written as students 0.75 kg. कैसे पता हमें? Because हमें पता है कि 2 zeros over 1, so we have to put the decimal before 2 zeros starting from the end. Alright students, looking at the next question, what is that? The question number 5. Find the whole quantity if 5% of it is 600. अब हमें total quantity बतानी है अगर उस किसी quantity का 5% किसके equal हो, 600 के equal हो. For example students, let the whole quantity be x. मान लीजिए कि फुल क्वांटिटी जो थी वो x थी, तो हमें क्या बता रखा है कि उस x का 5% क्या होता, 600 होता, राइट? उस x का 5% क्या होता, 600 होता. सो इट कैन बी रिटन एज 5/100 into x is equals to 600, राइट स्टूडेंट्स? अब हमें निकालना क्या है, जो होल क्वांटिटी थी वही निकालनी है ना, तो x को एज इट इज रखेंगे और 5/100 को वहाँ पे मतलब कि हमारी RHS पे ट्रांसपोज कर देंगे. तो 600 into 100 over 5. So 5 will be cancelled out from the table of 600. So it is 120. So students, x is equals to 120 into 100. Now students, this 120 into 100, this can be written as x is equals to 120 into 100. So this x is equals to 12,000. This is the whole quantity. Alright students, if 5% is 600. Looking at the next question students, what is that? 12% of the whole quantity is 1080. If 12% of it is 1080, then what is the whole quantity? Similarly, we are going to discuss this particular question. Let the whole quantity be x. हमने क्या किया, होल क्वांटिटी को x मान लिया, राइट? अब हमें पता लगा कि 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1080, राइट स्टूडेंट्स? सो 12/100 into x is equals to 1080, राइट स्टूडेंट्स? 12% ऑफ x इज 1080. अब हम क्या करेंगे, 12% मतलब 12/100 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1080 into 100 upon 10. ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी. कैसे? बिकॉज 100 डिवाइड में है तो 100 क्या चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और 12 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द टेबल ऑफ 12 into 9 is equals to 108. So 12 into 9 is equals to 108, then again 10, so 90. So students, x is equals to 90 into 100. So the x is equals to 9,000 rupee. Alright students, this is the whole quantity. Alright, looking in the next question students, what is that? Find the whole quantity if 40% of it is 500 kilometers. Alright, similarly you have to do the question, let the whole quantity हमने मान लिया कि जो फुल क्वांटिटी थी वो x थी. सो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 500. सो 40/100 into x is equals to 500. x will be as it is. So this 40/100 will go to the right hand side and this 100 will be multiplied and this 40 will be divided. Alright, 0 will be cut out from this 0. Now students, this is 50 into 100 upon 4. This 4 and this 100 will be cancelled out on the table of 25. So this is 25. So x is equals to 50 into 25. It is equals to 1250 kilometers. Alright, because we are given that its 40% is in the kilometer. So the 100% of the quantity is 1250 kilometers. Alright students, looking at the next question, what is that? D part. Find the whole quantity if the 70% of it is 14 minutes. Alright students, so let
the whole quantity be x. हमने complete quantity क्या ले ली है? x ले ली है. Now according to the question, 70% of x is equals to 14 minutes. Right, students? 70% of x is equals to 14 minutes. It can be written as 70 upon 100 into x is equals to 14. Now, students, we'll transpose this 70 upon 100 to the left and to the right hand side. It will become 14 into 100 upon 70. 0 will be cancelled out from the 0 on the table of 7. 14 is cancelled on the table of 2. 7 into 2 is equals to 14. Now, students, this x will be 2 into 10. That is, x is equals to 20 minutes. And this is the required whole quantity. कि अगर quantity 20 minutes थी तो उसका 70% कितना होगा? 14 minutes होगा. Simple. Looking at the next question, students, what is that? Part E. Find the whole quantity. If 8% of it is 40 liters, let the whole quantity be. Let the whole quantity be x. हमने मान लिया कि जो complete quantity थी वो x थी. So 8% of x is equals to 40 liters. Alright, students. So 8 upon 100 into x is equals to 40. Now, students, 8 upon 100 into x, we have to find the value of x. So x will be as it is and will have that 100 at its multiplication and 8 in the division. On the table of 5, 5 into 8 is equals to 40. So, students, 5 into 8 is equals to 40. So, x will be, so students, x is equals to 5 into 100, that is 500 liters. And this is the whole quantity. Because, students, 8% of it is 40 liters. Alright, looking at the next question, students, what is that? Convert given percents to decimal fractions and also to fractions in simplest form. So basically, students, there are the percentages given to us, and firstly we have to convert them into decimal fractions and also the fractions in the simplest form. Alright, students, we have to solve it in two parts. For example, if this is 25%, students, then I can write this 25 upon 100, right, students? So if it is 25 upon 100, I can write it like that now. And this is the decimal fraction. Why? Because 25 upon 100, number of zeros over 1 is 2. So basically we'll have the decimal before 2 digits starting from the end. Alright, students. So it is 0.25. ये तो हो गया, हमने इसको decimal fraction में क्या कर दिया? Convert कर दिया. अब हमें क्या करना है? फ्रैक्शंस में इसको देखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. फ्रैक्शंस क्या थी? ये जो खुद है 25/100, ये फ्रैक्शन ही है. ठीक है. तो अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है, मतलब 25/100. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इनको शॉर्टेस्ट टेबल पे कट करना है. सो ऑन द टेबल ऑफ 25, 25 into 4 is equals to 100. So 25 के टेबल पे 25 into 1 is equals to 25 and 25 into 4 is equals to 100. So this is 1 upon 4. तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, स्टूडेंट्स? इट इज 0.25 एंड इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1 upon 4. ऑलराइट, स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज 150%. 150%, students, it can be written as 150 upon 100. Alright, firstly we'll have this as the decimal fraction. कितने zeros हैं वो 1, 2 zeros, तो हम कहाँ लगाएंगे? 150 लिखने के बाद end से start करेंगे और कितने digit से पहले zero लगाएंगे? decimal लगाएंगे 2 digit से पहले. So 1, 2, तो यहाँ पे हमने decimal लगा दिया. ये तो हो गया decimal fraction. Alright, students, अब हमने क्या करना है? इसको fraction बनाना है simplest form के अंदर. So ये जो था 150 upon 100, जीरो से कैंसिल हो गया, जीरो. क्या बचा स्टूडेंट्स? 15 upon 10. अब देखिए, क्या ये दोनों एक ही टेबल पे कट रहे हैं किसी कॉमन टेबल पे? यस. 5 into 3 एंड 5 into 2. तो 5 into 3 is equals to 15 and 5 into 2 is equals to 10.
सो इसका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन 3/2. डेसिमल फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स इसका 1.50. ओके, एंड इसका simplest fraction क्या आया 3/2. All right students, this is the way you can solve the question. Next question students, 20%. Now students 20%. It can be written as 20/100. 20/100 students, firstly in the form of decimal fraction it can be written as, देखिए 20 ना डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगना चाहिए, 2 zeros over 1 है तो 1 2. डेसिमल किससे पहले लगेगा, 2 डिजिट से. ये तो हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन. अब इसको हमने निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. नाउ दिस 20/100. 0 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम द 0. 2/10. अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2/10 का कॉमन टेबल क्या होता है, 2 के टेबल पे करता है ना. 2 into 1 is equals to 2, 2 into 5 is equals to 10. So students 20% का डेसिमल फॉर्म क्या आएगा 0.20 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा 1/5. All right, and in this particular way you can easily solve the questions. Next students, 5%. 5% means 5/100. Firstly in the decimal form it will be 0.05. Okay, 0.05. And in the simplest form 5/100 it will be cancelled out from the table of 20. Okay, 5 into 1 is equals to 5 and 5 into 20 is equals to 100. So students 0.05 and this 1/20. All right students, this is the D part of the question number 6. Looking at the next question students, what is that? Question 7. Now students, in a city 30% are females, 40% are males and the remaining are children. What percent are children? So basically अगर एक सिटी में 30% क्या है फीमेल्स हैं, 40% क्या है मेल्स हैं, तो बचे हुए हैं तो वो बच्चे होंगे ना, तो कितने होंगे. हमने हमारी लास्ट क्लास में बात की थी कि टोटल परसेंटेज कितनी हो सकती है 100% ना. तो 100% में 30% फीमेल का हटा दिया, बचे क्या मेल्स और चिल्ड्रन. 100 minus 30 70%. अब 70% में मेल्स भी आएंगे और चिल्ड्रन भी आएंगे. राइट स्टूडेंट्स, मेल्स भी आएंगे चिल्ड्रन भी आएंगे. अब मेल्स का उन्होंने बोला है 40% क्या है मेल्स है, इसमें से 40% भी हटा दिया, क्या बचा स्टूडेंट्स 30%. अब ये 30% क्या होगा, बच्चे तो होंगे ना, दीज विल बी चिल्ड्रन. ओके, तो क्या परसेंटेज होगा चिल्ड्रन का स्टूडेंट्स, इट विल बी 30%. अब लिखना कैसे इस क्वेश्चन को, ये देखिए टोटल परसेंटेज females or females, it is 30%. Total percent of males, it is 40%. अब यहाँ लिखिए total percent of females and males, it is 30% plus 40% is equals to 70%. अब मतलब 70% तो क्या हो गया मेल्स और फीमेल्स हो गए ना. अब टोटल चिल्ड्रन इन परसेंटेज, हमें परसेंटेज में देखना है ना, तो ये क्या होगा 100 माइनस मेल्स फीमेल्स का एडिशन को माइनस कर देंगे, माइनस 70%. ओके, सो स्टूडेंट्स 100 माइनस 70 कितना होता है 30. सो इट इज 30%. ऑलराइट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड solution to this question. The next question students, out of 15,000 voters in a constituency 60% voted, find the percent of voters who didn't want. Can you now actually find how many actually didn't vote? So students, इस question में हमें बोला गया है कि एक constituency है जिसके अंदर total voters कितने हैं 15,000. राइट, यहाँ पे दे रखा है. इस 15,000 में 60% ऑफ जनता ने वोट किया है. ओके, 60% ने अगर वोट किया तो एक तो हमें बताना है कि किन्होंने वोट नहीं किया. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स. अब हमें उतने परसेंटेज ऑफ वोटर्स बताने हैं जिन्होंने वोट नहीं किया.
एक तो वो परसेंटेज बतानी है और एक एक्चुअली वो नंबर बताना है जिन्होंने वोट नहीं किया, मतलब जो भी आएगा ना परसेंटेज उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स राइट इट लाइक दैट, इफ 60% of total voters voted, अगर टोटल वोटर्स में 60% ने वोट किया, देन वोटर्स who didn't vote is equals to 100 minus 60%. ओके, अगर 60% ने वोट दिया है तो किन्होंने वोट नहीं दिया, 100 माइनस 60 दैट इज 40%. ओके, तो अगर 60% लोगों ने वोट दिया तो किन्होंने वोट नहीं दिया, 40% ने वोट नहीं दिया. ये तो हमने बता दिया कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स क्या थी, कितनी थी, 40%. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी एक्चुअली डिडंट वोट. अब हमें बताना है कि कितनों ने एक्चुअली वोट नहीं किया. We know that 40% of the people didn't voted. All right, students. So people who didn't vote is equals to 40% of. ये वो जनता है जिन्होंने वोट नहीं दिया है. 40% of total voters. Total voters कितने हैं students? 15,000. Of 15,000 voters. All right. सो स्टूडेंट्स अब 40% क्या होगा, 40/100 इंटू ऑफ का मतलब क्या है, इंटू 15,000. 2 zeros will be cut out from the 2 zeros. 40 into 150. So students, 15 into 4, 60. Then this 0, then this 0. So 6,000 voters didn't vote. तो स्टूडेंट्स 6,000 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था. अगर स्टूडेंट्स बोला जाए कि बताइए कि किन्होंने वोट किया था, तो 15,000 माइनस 6,000 दैट इज 9,000. तो 9,000 वोटर्स ने वोट किया और 6,000 ने वोट नहीं किया. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी. अगर मीता जो है अपनी सैलरी में से 4,000 बचाती है, ठीक है. If this is 10% of her salary, what is her salary? अगर वो 4,000 बचा रही है और बोला गया है कि ये जो बचा रही है ना, वो जो ये सेविंग कर रही है वो उसकी सैलरी का 10% है, तो हमें बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो फर्स्टली लेट हर सैलरी बी x. हमने मान लिया कि उसकी सैलरी कितनी है, x. तो उसकी सैलरी का 10% ऑफ हर सैलरी इज इक्वल्स टू 4,000. यही तो बोला है ना क्वेश्चन में कि उसकी सैलरी का 10% क्या है, 4,000 है. तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4,000. 1 0 will be cut out from the 1 0 students. It is x/10 is equals to 4,000. अब यहाँ देखिए वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें इसको 10 को वहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा. अगर ये डिवाइड में है तो ये राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा. सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 4,000 इंटू 10. सो x इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो द सैलरी ऑफ मीता इज 40,000 रुपीज. यू हैव टू राइट मीता's सैलरी is equal to 40,000 rupees. And this is the required solution. Looking at the next question students, what is that? A local cricket team played 20 matches in one season. Okay, एक local कोई cricket team है जो एक season में कितने matches खेलती है, 20 matches. Okay, it won 25% of them. Okay, और बोला गया है कि अगर एक season में वो टोटल 20 मैच खेल रही है और उसमें से वो 25% जीतती है, विन करती है, ठीक है. सो हाउ मेनी मैचेस डिड दे वन. हमें यही बताना है कि उसमें से कितने मैच ही जीत रही है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो हैव अ लुक. टोटल मैच प्लेड इज इक्वल्स टू 20 मैच टोटल मैचेस है ना. सो मैच
matches, 1 is equals to 25% of total. ये है ना, कितने जीत रही है वो? 25% of total matches. Okay, so 25% of कितना? 20. 20 मैच का 25% वो जीतती है. So 25 upon 100 into 20. Now students, 0 will be cancelled on this table of 0. 25 into 2 upon 10. 25 into 2 is equals to 50. 50 upon 10. 0 will be cancelled out from this 0. It is 5. 5 matches. So students, वो क्रिकेट टीम जो है वो कितने मैच जीत रही है? 5 मैच जीतते. कितने मैचेस जीत रही है? 5. बिकॉज अगर वो 20 खेल रही है और 25% जीत रही है तो 20 का 25% देखेंगे ना, 20 का 25% कितना होगा? 5 मैचेस. तो वो कितने मैचेस जीतती है? 5 मैचेस जीतती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 8.2. In the next class, students will be starting the exercise 8.3. Till then, students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day, all of you. Bye-bye.